Yeah, starting with next example. Now, since you have already seen two examples, so it will be very repeated or tedious kind of some things like boring. So I would expect you all to solve on your own. I'll just go through it quickly just to make you sure about the steps. That's it. तो जो भी एग्जाम्पल्स सॉल्व किए हुए हैं वो गो थ्रू करो और जो भी अनसॉल्व है दैट यू विल हैव टू सॉल्व. So the next language which we have to prove which is not regular is this a raised to m b raised to n where m is greater than n. So in that case what this language is telling that कि जो भी strings है उसमें length of a should be greater than length of b. So for that again the FSM will need to store or say keep a track of number of a's, and we know that that is not possible because of limited memory, and that is very obvious by now. Hence because of that the language will not be accepted, and because it is not accepted by FSM it is not regular. So ये रहा उसका proof. Similar steps, a is regular ये assume करेंगे क्योंकि हमें लास्ट में कॉन्ट्राडिक्शन देना है. सो इजी हो जाएगा अगर हम उसको रेगुलर अज्यूम करते हैं तो, क्योंकि लैंग्वेज विच इज रेगुलर उसका पंपिंग इजीली यानी वो रिपीटेड इजीली होना चाहिए सच दैट इवन आफ्टर रिपीटिंग द स्ट्रिंग इट शुड बिलोंग टू द ओरिजिनल सेट. बट ये हो नहीं पाएगा, इसके लिए अपने लिए बहुत इजी हो जाएगा टू प्रूव दैट द लैंग्वेज इज नॉट रेगुलर. सो ये कंसेप्ट है. Now again we are assuming pumping length over here. So in this case I have assumed pumping length as 5. So see, I am taking a string s such that a raised to p and b raised to q. Now where p should be greater than q, so if I am taking p as 5, so q will be p minus 1 4. ऐसा कुछ जरूरी नहीं है आप p को p को 5 लेंगे लेकिन q को आप 4 लेना ही, ऐसा कंपल्शन नहीं है. You can take it as 3, you can take it as 2, you can take it as 1 also. You only have to make sure about the condition that number of a's should be greater than number of b's. So आप जो भी p का वैल्यू ऊपर यहाँ पे लोगे you have to make sure that p ka value is greater than q ka value. That's it. Not even equal, it should be greater. That is what is given over here in the language. Then it says assume, then we'll divide into three parts. So assuming the pumping length is 5, so q equals to p minus 1, that is 4. So p ka value is 5, q is 4. So we have a raised to p and a raised to 5, so we have 5 a's. B raised to q yani 4, so we have 4 b's. So we have 5 a's followed by 4 b's, which is defining the language till now. Then it says divide s into three parts, so x, y, z in all possible ways. So we are considering that first the y part lies in a, second the y part will lie in b, and third the y part will lie in both a and b. So ये रहा where the y part lies in a, so ये रहा y part जिसमें सिर्फ a ही है, and x and z. And it is not compulsory to divide in this way. If I say that the y part is lying in a, it means you can also take 1a or 2a. You can divide this with number of strings or say number of symbols as you want. ये just एक example है. Second y part lies in b, so I have taken 2b. So उसके पहले का सब x, z. Then we have a and b, so here is x, here is z. So these are the three cases. Then as usual we are proving x raised to y I z. I का वैल्यू 2 हम इसके लिए रखते हैं क्योंकि हम स्ट्रिंग्स ऑलरेडी बहुत बड़े ले रहे हैं तो वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा if I take I का वैल्यू as 4 5. But again if you want to keep your strings short and if you want to take larger number over here, that is okay. So when you prove x y raised to z, see over here, so x is 5a's and sorry x is 2a and y is 3a. So for this x is 2a, y is 3, 1 2 3a, y square है तो वापस 3 and then b. So if you see the original string does not belong to our language. Similarly if you prove over here, see 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7, this is also not possible. And over here ab ऐसा बीच में आएगा, so the conditions are not satisfied. अगेन ये रहा तीनों कंडीशंस, y इज ग्रेटर देन 0 ये सबके लिए ट्रू है. लेंथ ऑफ एक्स वाई, फर्स्ट केस में द लेंथ ऑफ एक्स वाई इज 5, तो 5 लेस देन इक्वल्स टू 5 करेक्ट है, कंडीशन सेटिस्फाई हो गया. यहाँ पे इट इज नॉट सेटिस्फाइड, यहाँ पे भी इट इज नॉट सेटिस्फाइड. Hence, because the conditions cannot be satisfied, we prove that the language is not regular. Now, already we have done 3 examples. Fourth example, I'll actually go very short.
I'll just explain you the definition of the language which we have to prove which is not regular. The language says a such that 0, 1 where 0 raised to I 1 is 2i. तो 0 जितनी बार होगा 1 should be 2 into I, where if number of ones should be 2 times the number of 0. यानी अगर I का वैल्यू 2 है तो यानी 0 दो बार आएगा, so 2 into 2 is 4, तो 1 कितना आएगा 4 times. तो सी ये एग्जाम्पल ऐसा है, ये लैंग्वेज का मतलब ऐसा है कि स्ट्रिंग ऐसा होना चाहिए. 0 raised to I where I is 2, so 0 कितनी बार आया 2 बार. यहाँ पे 2i मतलब 2 into 2 4, तो 1 कितना है 4 टाइम्स आना चाहिए. सो वी से दैट नंबर ऑफ वंस इज 2 टाइम्स द नंबर ऑफ 0. सो यहाँ पे मैंने ये स्ट्रिंग लिया है p, सो 2 into p. सो अगर p का वैल्यू 3 है तो 2 into p विल बी 6. देन वही तीन केसेस एक्स वाई जेड को अलग अलग पॉसिबल वेज में डिवाइड करो. सो यहाँ पे मैंने लिया है वेर y बिलोंग्स टू 0 पार्ट, where y belongs to 1 part, where y belongs to 0 and 1 part, and then you prove whether the जो स्ट्रिंग हमें यहाँ से ये फॉर्म से मिलता है दैट इज बिलोंगिंग टू ओरिजिनल सेट और नॉट, इफ इट इज डिफाइनिंग दैट सेट और नॉट, and whether that condition is properly followed or not. So once you see that the conditions cannot be satisfied, then you can prove that the language is not regular. So I hope with this 4 examples things are more clear. एंड ये जो यहाँ पे दिया हुआ है ये सम्स, ये आपको प्रैक्टिस करना है, इसका सॉल्यूशंस अवेलेबल नहीं है. सो प्लीज मेक श्योर दैट यू प्रैक्टिस दिस 4 सम्स एंड सेंड मी. एंड रेस्ट तो हमने क्लोजर प्रॉपर्टीज एज आई मेंशन कि कॉम्प्लीमेंटेशन तक मैंने पढ़ाया था. तो इंटरसेक्शन, डिफरेंस एंड रिवर्सल इज व्हाट यू आर सपोज टू डू इन होमवर्क. एंड एनी डाउट्स लेट मी नो.